बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर नौशीन अफशम है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री में हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा की तरह अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में बखैर व आफियत और खुशबाश होंगे। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपकी बेहद मशकूर हूँ और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। हमारा आज का टॉपिक है इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, जिसमें हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, देन उसकी टाइप्स देखेंगे कि किस किस टाइप्स के होते हैं, देन हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की डिटेल्स में जाएंगे जिसमें उनकी कैटेगरीज आएंगी और कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज की सिंथेसिस, उनकी एप्लीकेशंस और उनकी प्रॉपर्टीज आएंगी। So let's begin. First of all, what is the polymer? A large molecule that is made up of us linking together a series of small building blocks. For example, here the building block is ethylene. For ethylene, it comes to be CH2 double bond CH2, and when it polymerizes with n number of units of this ethylene monomer, then it turns to be here in this way, CH2 with the base n. And what is this n? It indicates the number of 1 to infinity. It might be possible 1, 2, 3 up to any number depending on the length of the chain of the polymer. So in this way, this small building block would be termed as monomer, and the resulting compound that is formed by linking together a series of these monomers would be termed as polymer. So the proper definition for the polymer is a large molecule that is composed of linking together a series of small building blocks that are monomers is called as a polymer. For example, polyethylene. As this is the formula of this polyethylene. So here you may see that the carbon content in this polymer is very high, because in every building block or in every monomer there are 2 carbon atoms. So it would indicate that it is from the alkene family, and for the alkene the common formula is CnH2n, where the value of n might be from 1 to onwards. So here the carbon content is very high, so it indicates these are the organic polymers. So the polymers which have the high carbon content are called as organic polymers. Now just come to the next one, that is inorganic polymers. So the main difference between organic and inorganic polymers lies in the vicinity of this carbon content. In the case of inorganic polymers, the carbon content is very much low. The main other difference is the inorganic polymers have been composed of the
inorganic moieties, which may be either metallic atoms, non-metallic atoms, groups, either non-metallic groups. For example, the group means like BF3. If here it is CH4, it would be termed as organic compound, and this is called inorganic group. And other metalloids as well. And the other property of inorganic polymers is that they also may have the organic compounds as their substituents. So the main backbone chain would be considered to be categorize these polymers as organic or inorganic polymers. आप इसकी जो बैकबोन है किसी भी पॉलीमर की, उसकी बेस पे इसको कैटेगराइज करेंगे कि ये ऑर्गेनिक बेस्ड है या इनऑर्गेनिक बेस्ड है। आगे जो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं, हम उनकी कैटेगरीज को देखते हैं, जिसमें मेनली 3 कैटेगरीज आती हैं। मेन 3 कैटेगरीज आने का मतलब ये है कि हम जो कैटेगरीज डिटेल में पढ़ेंगे उनमें हम मेन 3 कैटेगरीज को देखते हैं, जिसमें आता है सिलिकॉन्स। The first one is silicons. The second one is phosphogenes. And the third one is electrically conducting polymers. Inorganic polymers that would be studied in detail here. लेकिन इन 3 के अलावा भी बहुत सारी different types के inorganic polymers exist करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलिकॉन्स क्या होते हैं। बेसिकली ऐसे polymers जिनकी बैकबोन में सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑल्टरनेट कर रहे हों और एक दूसरे से लिंक्ड हों, उनको हम कहते हैं सिलिकॉन्स या सिलिकॉन पॉलीमर्स। अब देखें सिलिकॉन ऑक्सीजन, इसमें जो मेन हमारा मोनोमर है दैट इज सिलिकॉन ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है क्योंकि ये 2 बॉन्ड्स बनाता है और राइट एंड लेफ्ट 2 बॉन्ड्स इसके प्रेजेंट है। लेकिन सिलिकॉन कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है और इस लिहाज से ये 4 बॉन्ड्स बनाता है। 2 इसके पास ऑलरेडी है, 2 के लिए हम कोई भी ग्रुप अटैच कर सकते हैं जो इसके लिए कंपैटिबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑर्गेनिक ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड अटैच करवा देते हैं, दैट इज मिथाइल, and it might be possible that this methyl group would be substituted with any other organic moiety or any other organic compound, for example ethyl, propyl, isopropyl, neopentyl. So it might be possible to be substituted with any other organic group, but for the simplification हमने यहाँ पे just methyl groups attach किए। इसी तरह बाकियों के साथ भी, बाकी सिलिकॉन एटम्स के साथ भी हमने मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया। अब तक ये पॉलीमर हम इसे नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ सिर्फ 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट्स। तो ये पॉलीमर, पॉली मीन्स मोर देन 1 और 2। तो जस्ट 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स के जरिए एक लॉन्गर चेन पॉलीमर तो नहीं बनता, सिंपल सी बात है। इसलिए हम इसको जब सिंथेसाइज करते हैं, लेट्स सपोज इसका जो मोनोमर है दैट इज सिलिकॉन एंड क्लोराइड।
फर्स्ट स्टेप एंड देन सेकेंड स्टेप में आपके पास ये जाएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है वो हम बाद में देखते हैं। अच्छा, इसके n नंबर ऑफ यूनिट्स लिंक होते जाते हैं एक दूसरे के साथ और उसके नतीजे में यहाँ पे आप n लिख देंगे इसकी बेस पे, जो पेरेंथेसिस स्मॉल पेरेंथेसिस है उसकी बेस पे आप n लिख देंगे। दिस वुड इंडिकेट दैट इट इज अ पॉलीमर। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके केस में आगे ये पॉलीमर कैसे बनता है। इसका होता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के केस